Good morning everyone. How are you beta? I hope you all are fine. Beta, today we will start exercise 1.4. Okay? Exercise 1.4 on page number 18. So open your books, page number 18. Look at the A part. Write the numbers in increasing order. Okay? Increasing order means when we write the numbers from smallest to greatest. जब हम numbers को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा. As you have done in grade 1 ना, grade 1 में भी आप करके आए हो. Smallest to greatest, or we can say ascending order, or we can say in increasing order. ये सब क्या है? सेम ही चीज है. ओके? सो बेटा फर्स्ट वी हैव 72, 76, then 71. Clear? We have 72, 76 and 71. We have to arrange these number in increasing order. Clear? So first of all beta, write down the places. Ones, tens, ones, tens, ones, tens. Clear बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना है? Places लिखनी है. Okay? Then we will compare the tens place of each number. सभी नंबर की हम tens place को compare करेंगे. Okay? In 72 we have 7 under tens. In 76 we have 7 under tens, and in 71 we have 7 under tens. So इन सब में क्या है? सेम नंबर आया हमारे पास टेंस के नीचे. सो वी कांट कंपेयर. इनको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते. क्लियर? सो वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट. नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे हम. इन 72 वी हैव 2 अंडर वंस. इन 76 वी हैव 6 अंडर वंस, एंड इन 71 वी हैव 1 अंडर वंस. सो बेटा टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट? 2, 6 or 1? Yes, which is the smallest? जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है. कौन आता है पहले? 2, 6 या 1? Yes, 1. So बेटा our number 71 is smallest. So write down 71. Clear? And put cross on here. Clear? Now we have to check which is smaller than 72 or 76. Yes, 7 को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते because in both the numbers 7 is same under tens. Now beta tell me which is smaller, 2 or 6? Yes, 2. So beta our number 72 is smaller. So write down 72 and put cross on here. Now we are left with 76. So in last we will write 76. Clear? इसमें हमने क्या किया है? नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. 71, 72, then 76. Clear? Yes beta, now we have second part. We have numbers 196, 169 and 96. Now we have 2-digit number and 3-digit number. Clear? Write down the places. Ones, tens, hundred. Ones, tens, hundred. Ones, tens. First of all we have to write the smallest number. सबसे छोटा नंबर. 196 क्या है? 3-digit number. 169 क्या है? 3-digit number.
नंबर एंड 96 क्या है, 2 डिजिट नंबर. सो इट इज ऑब्वियस 2 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट. इन सबसे क्या होगा, सबसे छोटा होगा ना. सो हियर वी विल राइट 96. देन सो पुट क्रॉस ऑन इट. नाउ बेटा चेक विच इज स्मॉलर, 196 और 169. क्या करेंगे इसके लिए, हम फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे. क्लियर बेटा, इन 196 वी हैव 1 under 100 and in 169 again we have 1 under 100. So we can't compare because both the digits are same. So we can't compare. इनको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. Then we will move to next digit. Clear? In 196 we have 9 under 10s and in 169 we have 6 under 10s. So बेटा tell me which is smaller, 9 और 6? कौन है सब छोटा इनमें से? Yes, 6, क्योंकि 6 क्या है, काउंटिंग में पहले आता है. So it is smaller. So बेटा our number 169 is smaller. So write down 169 and put cross on it. Clear? Now we are left with 196. So write down 196. Clear? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेसेस लिखनी है. अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर है, सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, 2 डिजिट नंबर, बिकॉज 2 digit is smaller than 3 digit number. Clear? Then we will compare the places. Clear everyone? Yes beta, look at the third part. We have 128, 31 and 100. So first of all beta, write down the places. Ones, tens, 100, ones, tens, ones, tens, 100. Clear? First of all we have to write the smallest number. सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे सबसे छोटा? Yes, as I have said you बेटा 31. It's a 2 digit number. 2 digit number क्या होगा? 3 digit number से छोटा होगा. इन दोनों से तो ये छोटा है. So first of all we will write 31 here. Put cross on it. Now we will compare 128 and 100. Okay. Now compare the first place. That means 100th place. Clear? In 128 we have 1 under 100 and in 100 we have 1 under 100. Both the digits are same, so we can't compare. क्या करेंगे अब हम? Move to the next digit. Clear? In 128 we have 2 under 10s and in 100 we have 0 under 10s. यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 2. So बेटा which is smaller, 0 और 2? कौन है सबसे छोटा? Yes, 0, because 0 क्या है, काउंटिंग में पहले आता है. So बेटा our number 100 is smaller. So write down 100 and put cross on here. Clear? Now we are left with 128. So write down 128. 31, 100 and 128. These numbers are now in increasing order, smallest to greatest. Clear? Then we have 105th part beta, 102, 105 and 100. Write down the places. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Clear? Now compare the first place beta, 100 place. In 102 we have 1 under 100. In 105 we have 1 under 100.
and in 100 again we have 100 1 under 100, so we can't compare. इसको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते बिकॉज ये तीनों डिजिट क्या है, सेम है हमारे पास. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट प्लेस. क्लियर? In 102 we have 0 under tens. In 105 0 under tens. In 100 we have 0 under tens. इसमें भी क्या हो गया? All the digits are same. इस तीनों में क्या है? 0 है tens place के नीचे. So we can't compare. Again we will move to the next digit, next place. Okay? In 102 we have 2 under ones. In 105 we have 5 under ones, and in 100 we have 0 under ones. So beta tell me which is smallest, 2, 5 or 0? कौन है सबसे छोटा? Yes बेटा 0. 0 क्या है? Smallest. So बेटा our number 100 is smallest. So write down 100 and put cross on this side. Clear? Write down comma. Then compare 102 and 105. यहाँ पे क्या है? 2. In 105 5 under ones. Which is smaller? 2 और 5? कौन है छोटा इनमें से? 2 और 5? Yes बेटा 2, because 2 क्या है? काउंटिंग में पहले आता है और 5 क्या है? बाद में आता है. So our number 102 is smaller. So write down 102. Clear? And put cross on it. Now we are left with 105. So 105 is greatest. So write down 105. Clear beta? So beta in this way you have to do the rest parts in increasing order. Clear? You have to complete the A part. Okay? Then we have B part. Write the numbers in descending order. Yes beta, write the numbers in decreasing order, or we can say in descending order. Clear? इसको हम descending order भी बोल सकते हैं, decreasing order भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? Biggest to smallest, greatest to smallest. Clear beta? Okay? So beta, firstly we will have 18, 74 and 80. Okay? Beta, decreasing order is opposite of increasing order. Yes. ये क्या है? उसका opposite है. Increasing order में हमने कैसे लिखा numbers को? Smallest to greatest. अब हम कैसे लिखेंगे? Decreasing order में greatest to smallest. पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा. Clear? We have 18, 74 and 80. First of all क्या करेंगे हम? Write down the places. Ones, tens, ones, tens, ones, tens. Clear? So बेटा ये तीनों ही क्या है हमारे पास? 2 डिजिट नंबर. तो हम क्या करेंगे? इनकी प्लेसेस को कंपेयर करेंगे. ओके? In 18 we have 1 under tens. In 74 we have 7 under tens, and in 80 we have 8 under tens. Clear? So beta, which is greatest? Greatest means बड़ा. 1, 7 और 8 में सबसे बड़ा कौन है? जो काउंटिंग में सबसे बाद में आता है. कौन आता है सबसे बाद में? 1, 7 और 8. Yes बेटा 8. So our number 80 is greatest. So on this side write down 80. Put cross on it. Clear? Now beta check 18 और 74 which is greater. इन दोनों में से कौन है बड़ा? इसको तो हमने लिख लिया. अब हमने इन दोनों में से चेक करना है which is greater. Compare the places. In 18 we have 1 under tens. In 74 we have
7 under tens. Which is greater, 1 or 7? Yes, 7 is greater because 7 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया. So बेटा our number 74 is greater. Put comma, then write 74, clear, and put cross on it. Now we are left with 18. That means 18 is smallest, सबसे छोटा नंबर है ये, clear. Put comma, then write down 18, clear. क्या किया हमने, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. That means greatest to smallest, clear. Then beta second part we have 134, 131, 138. ये भी क्या है, तीनों 3 डिजिट नंबर. क्या करेंगे हम, इनकी प्लेसेस को कंपेयर करेंगे. सो बेटा राइट डाउन द प्लेसेस. वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100. क्लियर. Now beta look at here, we have 1 under 100. In 131 we have 1 under 100. In 138 we have 1 under 100. ये क्या हो गया, all the digits are same, so we can't compare. इनको हम compare नहीं कर सकते. क्या करेंगे हम, अब हम we will move to next digit. In 134 we have 3 under tens. In 131 we have 3 under tens. In 138 we have 3 under tens. ये भी क्या हो गया, all the digits are same, so we बेटा we can't compare. इनको हम compare नहीं कर सकते. क्या करेंगे अब हम, again we will move to the next digit, or we can say next place. Clear. In 134 we have 4 under ones. In 131 we have 1 under ones, and in 138 we have 8 under ones. So beta which is greatest, 4, 1 और 8? कौन है greatest इनमें से, सबसे बड़ा कौन है? Yes, 8, because 8 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है. Clear. So beta our number 138 is greatest. So write down 138 and put cross on it. Clear. Now we will check which is greater, 134 or 131. इसके लिए हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे. Clear. In 134 we have 4 under ones, and in 135 we have 1 under ones. Which is greater, बड़ा कौन है इनमें से, 4 और 1? Yes, 4. So बेटा number 134 is greater. Put comma here and write down 134. Clear. Now we are left with 131. That means 131 is smallest, सबसे छोटा नंबर है ये. So put comma and write down 131 and put cross on it. Clear. इसको भी हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. क्लियर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं. ओके. Yes beta, look at the board. Now we have third part, 135, 200 and 154. Now we have to arrange these number in decreasing order. Clear. Write down the places. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Clear beta. So beta, first of all compare the 100 please. In 135 we have 1 under 100, and in 200 we have 2 under 100, and in 154 we have 1 under 100. So beta which is greatest, 2, 1, इधर तो 1 ही है. Clear. Which is greatest? Yes beta, 2. 2 is
greatest. So on this side we will write 200 because our number 200 is greatest. Put cross on it. Clear? Now we will compare 135 and 154. In 135, under 100 we have 1 and in 155 we have 1 under 100. ये भी क्या हो गया? सेम हो गया. इनको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते. So we will move to the next digit. Then we have 3 under 10s and on this side we have 5 under 10s. Which is greater, 3 or 5? Yes, beta, 5. So our number 154 is greater. Put comma, then write down 154. Put cross on it. Clear? Now we are left with 135. So beta, put comma and write down 135. 135 क्या है? सबसे छोटा नंबर है, इसलिए हमने उसको कहाँ पे लिखा? सबसे लास्ट में लिखा. क्लियर? देन वी हैव 199, 119 एंड 109. राइट डाउन द प्लेसेस. वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100. Clear? In 199 we have 1 under 100. In 119 we have 1 under 100. In 109 we have 1 under 100. So we can't compare. Then we move to the next digit. Then we have 9 under 10s. In 119 we have 1 under 10s and in 109 we have 0 under 10s. Which is greatest beta? सबसे बड़ा कौन है? Yes beta, which is greatest? 9, 1 or 0? Yes, 9. So beta, number 199 is greatest. So write down 199 and put cross on here. Clear? Now we have to compare 199 and 109. In 199 or 119 we have 1 under 100 and in 109 we have 1 under 100. Compare नहीं कर सकते. We will move to the next digit. In 119 we have 1 under 10s and in 109 we have 0 under 10s. कौन greater है? 1 और 0? Which is greater? कौन बड़ा है? Yes, 1 बड़ा है 0 से. 1 is greater than 0. So beta, number 119 is greater. So write down 119 and put cross on here. Now we are left with 109. That means 109 is smallest. 9 और 1 से तो 0 छोटा ही है ना. That means it is smallest. So in last we will write 109 and put cross on it. Clear beta? So beta, in this way you have to complete the all parts in decreasing order. Clear beta? Beta, if you have any query, so discuss with me. Okay? Thank you. Have a nice day.